Good afternoon to dear students. Today I will discuss about the comparison of auto diesel dual cycles. This is a part of unit 4 and the subject name is the thermodynamics. This is the outline of the today lecture. Carnot cycle, Otto cycle, dual cycle and their comparisons of the Otto cycle, diesel cycle and the dual cycle. The Carnot cycle, in this cycle, it is not a practical cycle, already discussed in the previous class. There are the two reservoir, high temperature reservoir and the low temperature reservoir, but there is no chances of the it may be of the absolutely 100% efficient, because in the cycle due to the ideal process which are used, which make not a cycle efficiency 100%. तो यहाँ पे एक ऐसी साइकिल जो है जिसको कि हम बात करते हैं कि वो प्रैक्टिकल आप उसको पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बोलना चाहिए जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करती है एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होती है, और बोलना चाहिए कि यहाँ पे पूरी तरीके से सिस्टम इफिशिएंट नहीं रहता है। प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती हैं उन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता, इंपॉर्टेंस नहीं रहता है कि एक प्रोसेस में पिस्टन काफ़ी स्लो स्पीड में मूव करे और दूसरी प्रोसेस में पिस्टन जो है काफ़ी स्लो स्पीड में मूव करे। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और रिलीज कर रहा है लो टेम्परेचर वायर को हीट। तो जो टेम्परेचर आपका TH और TL है रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज बना रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो वर्क डन हो रहा है हीट इंजन के द्वारा, दैट इज W इज इक्वल टू QH प्लस द QL एंड द QH इज ग्रेटर देन द 0 एंड द QL इज लेस देन 0. And this heat engine with the Carnot cycle also, Carnot heat engine can be simplified by the following model. This is the high temperature reservoir which is working at the TH high temperature, and the low temperature reservoir which is working at the lowest temperature. Reversible heat engine which is the operating of the two reservoir temperature, that is the high temperature and the low temperature, and after all the working which is the given the work net work done by the reversible cycle, that is the QH minus of the QL. This is the PV diagram, simply PV diagram in which the heat supply and the heat reaction which is represented in the diagram. 1 to 2 is the process isotropically, isothermal expansion in which the heat is supplied by the external sources. 2 to 3, this is the process in which the process which is the isentropic expansion is going on, in which the entropy remaining the constant due to the heat transfer. 3 to 4, isothermal compression process is started where the heat reaction is taking place to the sink body, and 4 to 1 there is a isentropic compression where the heat transfer is also again 0. Okay, so this is the Carnot cycle, the PV diagram explaining the how to engine is work. But in the practical cycle, Carnot cycle efficiency cannot be achieved 100% because of the some of the process which are involving in the cycle are lacking and not done to the in the practical case. So these are the process already discussed in the diagram. Process 4 to 1, it is a last process, adiabatic isentropic compression, in which already discussed there is engine is perfect insulated so that no heat is lost and the absorbed gas continue being the compressed slowly until the temperature rises from the lowest to highest temperature, and the process come to end when reaching to the initial state. So this is the TS diagram in which the heat transfer which is the represented 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. This is the thermal efficiency represented with the 1 minus or total net work done upon the heat supply by the general expression. This is the TS diagram obtaining the following parameter 1 minus of the TL by the TH. This is the main fundamental equations of the thermal efficiency of the Carnot cycle, and this equation is also referred to the Carnot efficiency. इसको Carnot cycle की efficiency के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में आपको बताया। तो जो आप देख रहे हैं कि थर्मल efficiency Carnot cycle की इन प्रैक्टिकल केस 100% नहीं रहती है। उस efficiency को 100% बनाना है तो प्रोसेस ऐसी बनानी पड़ती है ताकि वो आपकी रियल प्रैक्टिस में वर्क कर सके और इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। किसी भी साइकिल की इफिशिएंसी या किसी भी इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि ऐसी मशीन जो कि विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ द
any energy, it will produce the continuously work. How it is possible? ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करे, किसी भी एनर्जी को कंज्यूम किए बगैर। सपोज आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को यदि आप सोचें कि चला लें कंटिन्यूसली बिना पेट्रोल के, तो हाउ इट इज पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल केस? दिस इज द परसेप्चुअल मोशन ऑफ द मशीन फर्स्ट काइंड, जो कि इम्पॉसिबल केस है। ओके, then move to the Carnot efficiency. We can also draw the following conclusion: the Carnot efficiency only depends on the highest and the lowest temperature, not a in between, intermediate, or the another type of parameters. If we want to increase the Carnot efficiency, we can increase the highest temperature. यदि आपको चाहिए कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो आप हाईएस्ट टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए या लोएस्ट टेम्परेचर को कम से कम कर दीजिए। और यदि आपको कार्नोट एफिशिएंसी की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसके लिए फिर दूसरे मेथडोलॉजी भी अपनाने पड़ते हैं। रीजनरेशन करिए, आप रीहीटिंग करिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल केस बिकॉज ऑफ ड्यू टू द सम लिमिटेशंस। कुछ वहाँ पे लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम एडिशनल मेथड अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एफिशिएंसी जो कार्नोट हीट इंजन की है वो ज़्यादातर कम रहती है 1 से, और यदि आपको इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है या उसको एडिशनल आउटपुट देना पड़ता है, जिसकी वजह से आप इनपुट देना पड़ता है ताकि हम उसमें कुछ वर्क डन कर सकें। तो यहाँ पे टी एच इक्वल टू टी एल यदि हम लेके चलते हैं तो कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी 0 जाती है, बिकॉज ऑफ, बोलना चाहिए कि टी एच इज इक्वल टू टी एल। तो that means if only one reservoir system is not able to undergo a cyclic process, and of course no work can be obtained, कोई भी वर्क डन आपको नहीं मिलेगा। As mentioned above, the Carnot cycle is a reversible process which delivers the most work output for a heat engine operating between the same temperature limit. If the heat engine has a thermal efficiency, then the thermal efficiency of the normal engine, it is a less than of the thermal efficiency of the Carnot engine, that is called a irreversible heat engine. इस केस में हम बोल सकते हैं कि यदि कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में रिवर्सिबल इंजन जो रहेगा, जो आपका नॉन रिवर्सिबल से चला इंजन है, उस केस में इंजन की एफिशिएंसी जो है बहुत कम रहेगी। ओके, तो दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द फंडामेंटल। तो थर्मल एफिशिएंसी इरिवर्सिबल या बोलना चाहिए नॉर्मल इंजन की कार्नोट के बराबर है, इट मींस द रिवर्सिबल हीट इंजन है। एंड द थर्ड वन इज द व्हेन द thermal efficiency of the normal engine is greater than the Carnot efficiency, that is the unrealistic heat engine. ऐसा इंजन बना पाना इम्पॉसिबल रहता है जो कि जिसकी एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा रहे नॉर्मल इंजन की। ऑटो साइकिल की हमने ऑलरेडी बात की थी आपसे, निकोलस अगस्ट ऑटो नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मन इंजीनियर था, उसने ऑटो साइकिल को बताया था। और इसका यूज जो है पेट्रोल इंजन के गाड़ियों में किया जाता था। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द 4 प्रोसेस, दो जो कि 2 आइसेंट्रोपिक होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 आइसोकोरिक होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस कैन बी easily understood if we understand the pressure, volume and the temperature entropy diagram of the Otto cycle. This is the PV and the TS diagram in which all the processes are represented. 1 to 2 is the compression of the air only, 2 to 3 is the heat addition of the air with the contact of the fuel, which is supplied by the carburetor. Combustible mixture of the coming from the carburetor side, combustible mixture आता है जिसका कि compression होता है। After the compression, it is the heat addition done by the स्पार्क प्लग। यहाँ पे स्पार्क प्लग मिल जाएगा, स्पार्किंग कर देगा और कंटिन्यूसली हीट इज डूइंग दैट पार्ट, या यहाँ पे आके हीट सप्लाई जो है कट ऑफ कर दी जाती है। एंड आफ्टर दैट 3 to 4 एक्सपांशन एंड 4 to 1 it is the exhaust process. And TS diagram showing the heat transfer, how much amount of the heat is added at the process of the heat addition process, and how much amount of the heat is reacted in the heat reaction process, which is taking in the constant volume process. So these are the process which are already discussed in the Otto cycles. Process 1 to 2 isentropic compression already discussed, when the piston is moving from the BDC to TDC and the entropy remaining the constant, heat transfer is 0, pressure will increase from initial to final condition, temperature will increase from T1 to T2 and the volume will decrease from V1 to V2. The process 2 to 3 constant volume heat addition, in which the heat is supplied, is taking place. And during the heat supply, during the constant volume process, heat is supplying, is doing this process by the mCV T3 minus of T2, where the m is the mass, Cv is the specific heat at the constant volume. Process 3 to 4 isentropic expansion, in which the
expansion of the gases which is doing taking place, and the piston is going from the TD to BDC, and the entropy remaining the constant because of the isentropic expansion. 4 to 1 is the constant volume heat reaction in which the exhaust gases will escape to the atmosphere, in which the total volume of the remaining gas or the during the process remaining the constant, and the temperature will decrease from the T24 to T1, and entropy decrease due to the heat reaction process. So that's why the entropy will decrease from S4 to S1. The heat reaction is represented by the MCV T4 minus of T1 by the process. This is the mathematical equation. Thermal efficiency is equal to MCV T3 minus of T2 minus of MCV T4 minus of T1 upon the heat supply MCV T3 minus of T2. तो थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे ऑटो साइकिल की निकल के आ जाएगी, जो आप देख रहे हैं 1 माइनस ऑफ T4 माइनस ऑफ T1 अपॉन T3 माइनस ऑफ T2. या तो आपको हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू पता हो, या फिर आप इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में कर लें, जैसा कि मैंने आपको डेरिवेशन कराया था. तो डेरिवेशन जो आपका निकल के आता था 1 माइनस 1 अपॉन RC टू पावर गांव माइनस 1. देन मूव टू द डीजल साइकिल. इट इज अ गैस पावर साइकिल और द प्रेशर साइकिल. रुडोल्फ डीजल ने बताया था 1897 में, जो कि डीजल इंजन की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है. इट इज सिमिलर टू द ऑटो साइकिल. इन फैक्ट in this case only the air is enter from the outside in the combustion chamber or the compressor side, and this cycle heating is done at the constant pressure process instead of the constant volume process. Diesel cycle can be understood well if you refer it to PV and the TS diagram. This is the diagram in which all the process is represented. 1 to 2, that is already discussed in the previous class. Isentropic compression of the air, only it is supplying from the outside, and after that the compression, the air temperature and the pressure will increase, and at the point of 2 the fuel is admitted from the combustion chamber side into the combustion chamber side from the fuel injector side, and the heat addition taking place. And after that, when the fuel and the air is combined with the fuel injection process, that will the combustion process will be initiated, and up to that the combustion process will be cut off from the 3 point. This is the constant pressure heat addition, and after that when the expansion is taking place, 3 to 4 is the process of isentropic expansion, in which the entropy remaining the constant because of the isentropic expansion is going on. 4 to 1 is the constant volume the heat reaction, in which the heat is going out to the outside, so in the form of exhaust gases into the atmosphere. This is the PV diagram in which the net work done it is represented or the calculated. TS diagram in which the heat transfer is taking place, heat is supplying in this process, and 4 to 1 in this process आपका जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट जो है आपकी रिजेक्शन के फॉर्म में आ रही है. Process in the diesel cycle, isentropic compression. The piston moves from the bottom dead center to the top dead center. Air is compressed inside the cylinder. Pressure of air increases from P1 to P2. Temperature increases from the T1 to T2, and the volume decreases V1 to V2. Entropy remaining the constant. Work is done on the system in this process denoted by the Wn in the diagram above. 2 to 3 constant pressure heat addition. Heat is added at a constant pressure from the external heat source already discussed. 3 to 4 isentropic expansion is already discussed when the piston is moving from TDC to BDC. Process 4 to 1 constant volume heat reaction. In this process, heat is reacted at a constant volume. Pressure decrease from 4 to 1, and the temperature decrease from 4 to 1, entropy decrease from 4 to 1. Heat reaction process is taking out at a constant volume MCV T4 minus of T1 kilojoule. This is the dual cycle already discussed in the study class. The dual cycle, there is a number of parameter, number of the process which are taking place. Partially heat addition is taking place in this process, constant volume process, and partially heat addition is taking at a constant pressure process. So there are the combination of the heat addition process. यहाँ पे हीट जो है दो तरीके से ऐड की जा रही है, एक पार्शली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से और दूसरी पार्शली कांस्टेंट प्रेशर के द्वारा. So this is the compression, this is the partially heat addition at the constant volume, partially heat addition in the constant pressure, and there is the expansion in the through the isentropic process. 3 to 4 is the exhaust process, and the TS diagram already discussed, and there is a numbering system is different from the study class,
because of the starting of this numbering 1 to 2 is the isentropic compression, but here it is representing the 4 to 5. यहाँ पे अब जो नंबरिंग सिस्टम देख रहे हैं 4 to 5 लिया गया है, जबकि प्रीवियस क्लास में 1 to 2 लिया था. इट इज डजंट मैटर. हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, सेमी प्रेशर साइकिल कहलाती है. और जो हमने बताया कि इसका सिग्निफिकेंस साइकिल का मेन यही है कि जो पार्शली हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जाती है और पार्शली हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती है. तो जो इसका फार्मूला है वो भी हमने कल डेराइव कराया था आपको. ये फार्मूला उसका रहता है, दैट इज द 1 माइनस 1 अपॉन आर सी टू पावर गामा माइनस 1 और कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 इन द ब्रैकेट alpha, that is the pressure ratio, rho is the cutoff ratio to the power gamma minus 1 upon alpha minus 1, that is the pressure ratio minus of 1 plus the gamma into the alpha into rho minus of 1, where r is equal to compression ratio v4 by v1, v5 is equal to v3 by the v1, cutoff ratio, that is the v2 by v1 is equal to v2 by the v5, and alpha is equal to pressure or the expansion ratio. So ideal dual combustion cycle consists of the two reversible adiabatic or isentropically, two constant volume and the one constant pressure process, and these processes are represented in the PV and the TS diagram. तो कंपैरिजन यदि करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं. 2-3 क्राइटेरिया के बेस पे हम आपको समझा देते हैं कि पहला क्राइटेरिया यदि सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट रहेगा तो कौन सी साइकिल ज्यादा एफिशिएंट रहेगी. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द ऑटो डीजल एंड द ड्यूल साइकिल. तो कंप्रेशन रेशियो को यदि आप सेम रखेंगे उस केस में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन रेशियो इज अ रेशियो in which the volume at the beginning of compression to the volume at the end of the compression, that is the compression ratio, and if the compression ratio maintain 10 for the all the cycle, ऑटो डीजल और द ड्यूल साइकिल, तीनों साइकिल के लिए यदि हम सेम रखें तो उस केस के लिए जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि हीट जो इनपुट है या बोला जो टेम्परेचर राइज मिलना चाहिए वो आपका ऑटो साइकिल में ज्यादा मिलेगा. तो और जो वर्क डन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनसाइड ऑफ द बाउंड्री रीजन. जितना भी आपका बाउंड्री रीजन है उसके अंदर में जो वर्क डन आपका है वो ऑटो साइकिल में सबसे ज्यादा मिलता है. और ड्यू साइकिल की एफिशिएंसी हरदम ऑटो और डीजल के इन बिटवीन में लाइज करती है. मतलब कि यदि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 60% है और डीजल की 50% है तो 55% आपकी ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड द सेम हीट इनपुट. सेकेंड क्राइटेरिया फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड द सेम हीट इनपुट, यदि इसके बेसिस पे आप देखेंगे क्राइटेरिया के बेस पे तो चूंकि मैक्सिमम प्रेशर आपका जो राइज करता है वो डीजल साइकिल में राइज करता है, ये आपको पता होना चाहिए. यदि प्रेशर ज्यादा राइज वहां पे कर रहा है और हीट इनपुट आपका सेम है उस केस में आपकी जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कंपेयरिंग टू द ऑटो एंड ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी वो ज्यादा रहेगी. तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी अब सपोज आपकी 60% आ रही है और ऑटो साइकिल एफिशिएंसी आपकी 50% आ रही है तो 55% एफिशिएंसी आपकी ड्यूल साइकिल की रहेगी. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर एंड द सेम हीट इनपुट. तो ड्यूल साइकिल इज द मोर एफिशिएंट देन द ड्यूल साइकिल व्हिच इन टर्म इज द मोर एफिशिएंट देन द ऑटो साइकिल. तो ये चीजें आपकी देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड द सेम हीट इनपुट. ओके. And for the third criteria for the same pressure and the temperature conditions, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 जो आपका देख रहे हैं 1 2 3 4, दिस इज द ऑटो साइकिल, एंड 1 2 डैश 3 4 1 जो आपका है वो है डीजल साइकिल, और 1 2 डबल डैश 3 डबल डैश और आपका यहाँ पे 4 1 करेंगे तो ये आपकी ड्यूल साइकिल आ जाएगी. तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड द टेम्परेचर. तो इस केस में यदि आप देखेंगे तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी कंपेयरिंग टू द ऑटो एंड द ड्यूल साइकिल. तो दिस इज द टीएस डायग्राम इन विच द 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, दिस इज द फॉर ऑटो साइकिल. ये ऑटो साइकिल के लिए हो गया. और ये आप जो देखेंगे 1 2 डबल डैश फिर 3 4, तो ये आपका हो जाएगा डीजल के लिए.
सॉरी ड्यूल के लिए 1 2 डबल डैश डबल थ्री, फिर 3, और ये आपका हो जाएगा ड्यूल के लिए. दिस इज द लाइज बिटवीन ऑफ द इन बिटवीन ड्यूल, एंड दिस इज फॉर द डीजल. तो आप देखेंगे कि यदि आपका प्रेशर जो है मैक्सिमम रख दिया जाए और टेम्परेचर मैक्सिमम कर दिया जाए, तो उस केस में जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ द ड्यूल एंड ऑटो, इट इज द मोर पावरफुल. So because of the heat transfer area is obtained more. This is the heat transfer area. This is the more in case of this case. And the heat reaction, this is taking in this case. तो यदि आप देखेंगे तो heat reaction is the constant, not a variable form. But the heat addition is the more in the DO cycle. So that's why we are calling कि जो साइकिल एफिशिएंसी है इन दिस केस वो ज़्यादा रहेगी. तो साइकिल एफिशिएंसी हीट एडिशन जिसमें ज़्यादा रहेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी. बिकॉज ऑफ साइकिल एफिशिएंसी इज डिपेंडिंग ऑन द टू पैरामीटर, हीट सप्लाई एंड द हीट रिएक्शन. इफ द हीट सप्लाई इज मोर देन द हीट रिएक्शन, देयर विल बी अ चांसेस ऑफ मोर एफिशिएंसी. तो हीट सप्लाई आपकी ज़्यादा रहेगी. ठीक है ना. हीट सप्लाई किसमें ज़्यादा है? डीओ साइकिल में. तो उस केस के लिए आपकी डीओ साइकिल एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी. तो थर्मल एफिशिएंसी दैट इज द वन माइनस ऑफ द हीट रिएक्टेड बाय द हीट सप्लाई. तो हीट रिएक्शन को आप कम से कम कर दीजिए और हीट सप्लाई बढ़ा दीजिए, तो थर्मल एफिशिएंसी साइकिल की बढ़ जाएगी. दिस इज द मेन फंडामेंटल अबाउट ऑफ द साइकिल एफिशिएंसी. तो डीएल साइकिल इज मोर एफिशिएंट on the basis of the new criteria. So thank you. This is the today lectures.